वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट स्टडीज़। अभी देखो हम लोग फिल्म प्रोटेस्टा का करेंगे। उसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज कैटेगरीज टुगेदर IES कैटेगरीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स एंड विद सेल वॉल। दे आर ऑफ 5 टाइप्स, 5 टाइप के होते हैं। प्लांट्स लाइक प्रोटेस्ट हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइटेस, फाइटोप्लैंक्टोस, डायटोमिक। They are microscope photosynthetic organisms. Their cell wall is made up of cilia and their body is like soap box fitted into each other with the outer silicaceous cell. After the death of the organism, the silica cover of the cell wall get deposited in the cell wall, which is called as diatomaceous earth, which is used for separation, filtration, polishing. Okay. अभी animal like protist, they are called as protozoans. They do not have cell wall. They are primitive animal clones. They are different types of such as ameboidic protozoan, flagellated protozoan, ciliated protozoan and sporangial protozoan. मैं इसको पढ़ता हूँ, आगे पढ़ता हूँ। Amoeboid protozoan क्या होता है? Are free living, have pseudopodia for locomotion. One of the organs called amoeba histolytica causes amoeba dysentery. Flagellated protozoan have flagella for locomotion. One of them trypanosoma causes sleeping sickness. Ciliated protozoan have cilia for locomotion, and one of the organisms, Paramecium, has a cavity called guts. Sporozoan protozoan do not have any locomotory organs, and one of them, Plasmodium, causes malaria. मलेरिया क्रॉस करता है। फंजाइल एक्टिविटीज क्या होता है? ये क्या होता है? माइजोमाइसेट्स होता है। माइजोमाइसेट्स क्या होता है? There are a saprophytic. Their cell aggregate to form a large cell mass called plasmodium. Plasmodium spores are very tough and survive in harsh condition. Okay. इसके आगे का पॉइंट है नहीं है। अब इसका हम लोग करेंगे यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या होता है? They do not have cell wall but contain ligand CONTINS contains a proteinaceous pellish. They have 2 flagella, flagella, one short and other long. When the light is given, they can photosynthesize because they have pigments, but when there is no light is given, they act as heterotrophs. Example, Euglena. Abhi dinoflagellates. They are most aquatic and photosynthetic. Whether PHOTOSY and THESTIC. The cell wall is made up of cellulose post stiff cliffs. They have 2 flagella on the central position of the body. They have different pigments of various color like yellow, green, brown, blue and red. Gonacculus causes red type, so the sea appears red. अभी देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ हूँ, तो मैं ना थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। डायग्राम दिख रहा है आपको? तो ये डायग्राम आपको भी बनाना है, ठीक है? तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है, ठीक है? डायग्राम बनाने के बाद आपका क्या होगा? किंगडम प्रोटिस्टा जो चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। हम लोग अब इसके अंदर किंगडम फंजाई में, ठीक है? किंगडम फंजाई लिखने से पहले मतलब ये वीडियो में बना रहा हूँ किंगडम फंजाई के। किंगडम फंजाई हम लोग पढ़ लेते हैं। फंजाई क्या है? किंगडम फंजाई के भी जो टाइप्स है हम लोग वो अगले लेक्चर में देखेंगे, होगा तो वरना इस लेक्चर में लाता हूँ।
Organisms included in this category are multicellular eukaryotic saprophytics. Saprophytics को क्या बोलते हैं? Heterotropics. They are found in moist, warm, and humid place. They are made up of thread-like structure called as hyphae. Many hyphae comes together to form mycelium. Mycelium. Okay. Mycelium hyphae may be septate, uninucleated, or a septate multinucleated. A septate multinucleated hyphae is called as coinocytic hyphae. They show presence of rhizoids. Flash rule बोलते हैं. The cell wall of fungus is made up of fungal, cellulose, and chitinous. Some are heterotrophs, saprophytes, parasites, and predators. They reproduce by spore formation. इसको फ्रेगमेंटेशन लिखा है, F लिखा है, FRAGMENTADION, फ्रेगमेंटेशन, fission and budding. There is asexual method and fusion or conjugation. Conjugation, conjugation method is a asexual method. Some are symbiotic, that is mycorrhiza. Some are edible, that is mushroom. Some are antibiotics producing, that is penicillin. Some are disease causing to plants, that is Pucina. They are classified into 4 category. 4 category में इसको क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, पहली कैटेगरी क्या है? फाइकोओसीड्स. और सेकंड क्या है? एस्कोसिड्स, बेसिडोमाइसिड्स, ड्यूटोरोमाइसिड्स. ठीक है, हम लोग फाइकोमाइसिड्स देखेंगे. फाइकोमाइसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गे फंगाई बोलते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ कोइनोसाइटिक माइसीलियम. दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड डैम्पी हैबिटेट. ठीक है, GBADAT habitat. They are saprophytic and show presence of rhizoids. They can be parasites or plant mucor and rhizopus. अब आपको ये डायग्राम दिखता होगा, आई थिंक क्लियरली दिखता होगा. Ascomycetes, जिसको हम लोग sac fungi बोलते हैं. There are multicellular aspects, which is unicellular. ठीक है, the hyphae, branch and septate can be decomposers, parasites और लिखा और coprophilous. Some are edible, has morals and are truffly. Some are used in biotical experiments. Sorry, यहाँ थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा रॉन्ग हो रहा है. जेनेटिक रिसर्च लाइक न्यूरोस्पोर्ट्स थोड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन आप ये बोल दे रहा हूँ क्योंकि नंबर वीडियो बना हुआ थोड़ा बच्चों को करता लगेगा. सम आर डिजीज कॉजिंग लाइक एस्पेरागिलस. ये एस्पेरागिलस का डायग्राम है. ठीक है, अभी एस्पेरागिलस का डायग्राम बना लिया. बेसिडोमाइसिड्स हैड बीन ईजी है. अब कुछ भी ज़्यादा पूछते होते हैं ना. क्लब फंजाई. There are branch septate and saprophytes in nature. Some are disease causing to plants like Stilicho smudge. Some are edible like mushrooms. Some are decomposers, etc. तो एक और डायग्राम है, ये सब कर लेना. हम लोग आगे बढ़ते हैं. ड्यूटोरोमाइसिड्स, जिसको हम लोग इम्फर्ट फंजाई बोलते हैं. दे आर सेपरेटेड ब्रांच saprophytes. ठीक है, दिख रहा है? DIC SAPROPHYTAC, saprophytes in nature. Naturally, the organism for this category belong to the other 3 categories. This organism do not show sexual reproduction, so they are included in this form class. They only perform asexual reproduction. ठीक है, some are disease causing like alternation of voluntotricum. अभी इतना वीडियो बनाया हूँ, आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.